अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ hazekahali और आज आप लोग भी लाइव बहुत ही लेटेस्ट सी वीडियो से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो वीडियो का टाइटल है दुर्गा पूजा इन कोलकाता, मिस्टी डोई पंडाल हॉपिंग। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। So how many days does it take to make the whole tableau over here? The pandals that we are visiting today are an expression of creativity. And between every bite of a meal that you eat, a Bengali meat that you eat one aloo bhaja. Welcome to the heart of every Bengali, where devotion and tradition comes together as a celebration called Durga Puja. I'm in Kolkata, the time is Durga Puja, so come join me as we discover the love, the lights and the luchis of Durga Puja in Kolkata. And पूछते हैं लेकिन पहले हम शुरुआत करते हैं एक बहुत ही पुराने ट्रेडिशनल रीतो रिवाज वाले बंगाली घर से। फैमिली का नाम है सरदार और हम मिलने वाला है एरिका को। अंदर घर की प्राइवेट दुर्गा पूजा चल रही है। मिलते हैं उन्हें और वहाँ जाके थोड़ा भोग खाते हैं, प्रसाद खाते हैं और मीठा यानी मिष्टी खाते हैं। चलिए। It's just wonderful being inside such an old and ornate and traditional house. This is Erika and this is Rohit. They're soon to be married and it's the Sardar family, right? Yes, that's it your side of the family. Yes, absolutely. Whose house this is. Yes. And we're going to visit your Durga Puja. Right. The A family's family Durga Puja. Yeah. So tell us a little bit about how different is the Durga Puja in the house, in a traditional house like this, Right. vis-a-vis the pandals and the excitement that happens outside. I think the most important part of our family Durga Puja is that it is very closely knit. So everything is done by the family members and for the family members. And it's not open to public also to come. Correct. Only you can come visit our puja if you're a guest or an invitee. And also, I just had a peek at the idol. The idol Right. is as big as it would be if it was in a pandal. So Right. normally say in Maharashtra when Ganesh Chaturthi happens, Correct. the घर में जो होता है वो छोटा सा होता है गणपति. Right. So we have this specific measurement. Haan. So as per that only every year the deity is made. And it is made here. We don't get it from outside. We have the traditional artist who comes and makes the Right complete right over here. Yes. And also the face is made in a chach, which so that the face is same every year. That Okay, is so also it's- very important. So yeah, so it's a familiar face that comes Right. visiting every year. Yes, absolutely. And then what is the prasad or what is the bhog normally during Durga Puja? So for us, we don't have cooked food given as prasad, Okay. but that's what everybody comes and enjoys the lunch over here, which is very specific and completely Bengali food that we have for all the days of the puja. But the prasad is sweets and like mithai and fruits. Okay. And the food that we're going to be eating today is what's cooked in our kitchen, but it's all pure veg. And Bengali pure veg means without onion and garlic. So that's Okay. very, very particular. And we start that from right after Mahalaya over here. And we start non-veg after Navami, home happens. Because yes, I have seen non-vegetarian food also happening during puja. Right. So it's after Navami. That's after the home. So from Navami onwards, in our house we have. So I'm looking forward to whatever the prasad is, and I believe young Rohit over here is also an expert with sweets and mishti and mithai. So we're going to taste some of that also. Absolutely. Yeah. On my mind. So how many days does it take to make the whole tableau
over here? So this basically starts on the day of Rath Yatra. The Okay. Kathamod, the wooden structure on which it is built, the puja is done on the day of Rath Yatra. Okay. And from that day onwards, it starts getting starts. to be built. And this jewelry and all is Heirloom. the heirloom stuff. So every year the jewelry goes on Yes, to the yes, goddess there. yes, absolutely. Oh, this is nice. Now I think it's time to Dig in? dig in a little bit. Absolutely. Little bit of prasad and little bit of bhog Done. and little bit of meetha. Huh? Yes? Yes. Come. Peek at the food before it was served, and it's looking all very yummy. I must Thank say. you. Very Not nice. that I've made it, but still. But that's okay. But I think, you know, food when it is cooked in large quantities, Right. it always tastes better, doesn't it? Yes. Not that when it is cooked at home, it doesn't taste good. It's different, na? Like शादी का खाना जब होता है, पूजा का खाना जब होता है. And it has different emotions, you know, with food and everything. So Absolutely, absolutely, yeah. So this is luchi. Of course, the world famous luchi. Absolutely. Yes. This is white rice. White and rice. this is not basmati rice. Okay. This is Shiddho chal. Shiddho. Parboiled rice, which Okay. is very common in Bengali household. Okay. So this is So what the kind we of have. rice is called shiddho? No. Shiddho chal, parboiled rice. Parboiled basically. rice, okay. Parboiled rice. Okay. This is dal, Dal. Okay. aloo bhaja. Aloo bhaja. This is potulate dorma. This is Potulate dorma. Okay. So this has a filling inside. Oh, it's tough. Yes, it is stuffed. Okay. And this is fulkopi aloo tarkari. Wow. And this is called I love the way that sounds. Fulkopi aloo torkari. 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 Very nice it sounds. And this is plastic paper chutney. So this is raw papaya chutney. Oh, and what did you call it? Plastic paper, because see, it's like It looks like plastic. transparent and plastic, right? So it's called Plastic. plastic paper chutney. Yeah. Plastic pepper chutney. Nice. Yeah. The food sounds as good as it is going to taste. Right. Yeah. Generally, we have the dal, Okay. rice, and aloo bhaja together. Aloo bhaja. Aloo Yes. bhaja. Rice, dal, and aloo bhaja together. And then I can see that Rohit has lined up lots of these, just sitting in front of a plate full of Misti over there. Yes. There are lots of sweets. Because I think Pujo and any festivity is incomplete without Mishti. So we have this specific, Rohit will tell us about the specific sweets that we have. And these are the traditional sweets that we have for Pujo. Also, yeah. Also the full gobi Right. is also yummy. It has all the food when cooked for a puja Right. automatically gets another kind of flavor, doesn't it? Absolutely true. In fact, on Ashtami, we have another kind of khichdi. They made it very simple today because today is Shashti. On Ashtami, when we have the main khichdi, which is the Ashtami Bhog, that khichdi, tastes very different from any khichdi that we cook throughout the year in our house. Even though we do not give this for Bhog, but that, the essence, the festivity in the house adds on to this entire thing. Oh, so what is it stuffed with? So today I think they have put in a little bit of dal, a little bit of chena, a little bit of mewa. I think you're getting I'm all giving the this. meva and chena flavor. Flavor. What I'm getting. And it's very, very interesting when you have meva and chena, both milk products in a way, mixed with spices and a little bit of sweetness in it. Yeah. And it's just unbelievably good. Whoa. And between every bite of a meal that you eat, a Bengali meal that you eat one aloo bhaja. I'm going to try the plastic paper chutney. A lot of sweet flavors in the food, Even this has got a sweetness, the chutney got a sweetness. The dal also has got a little bit of sweetness, which I really like. Delicious.
I just love luchis. I normally like my luchi with a good kosher mangsha. That's then a very popular delicacy which we'll have on Doshu. We have mangsho and So depending on the day of Durga Puja, Right. the menu changes slightly. Yeah. I think it's time for to move towards the sweets. yes. So let me tell you one thing. Rohit's family has run a confectionery business or a mithai place, what I call it that, for, for now, how many years now? For 138 years. 138 years. 1985. I can see you got a wonderful full plate full of stuff in there. And can you tell me what it is and what I should taste? This is known as the buttercream sandesh. This has a kesar flavor. Buttercream sandesh. Oh, here we go. Bengal and sweets. What can I say? It has a hint of a kesar ka flavor inside. Okay, you'll see the And you kesar. can see the kesar on top. It is really light, this sandesh. Exactly. Normally the sandesh is a little denser, but this is like eating butter and cream together. So, over generations I've seen people have become a little bit health conscious. They want, the sweets with lesser sweet content, lesser. I'm listening. Right? Yes. So that's why we have, catered to all kinds of people. So you mean I can be really healthy and eat all this stuff? Come on, Absolutely, bring it absolutely. on, bring it on. This is known as the Labunya Sandesh. This has a Labunno. speciality is if you remove the rose petal on top, it has a layer of shor that is condensed milk on top. Oh, so this is a layer of condensed milk on top, you said? Yes, this is known as shor in Bengal. With a whole layer came into my mouth. Oh, it's very nice. It's very nice. It's probably the finest sandesh I've eaten. I must say, I must confess, it's very nice. And I cannot come to Calcutta and not have some rasgulla. Absolutely. So I'm going to try some of the rasgulla. And then finally I will have the, Misti Doi. because that is my favorite, eventually. So one rasgulla. And you're supposed to put the whole thing in the mouth, I suppose. Absolutely. Always? Yes. Whole thing in the mouth? Ah! I normally when I eat rasgulla, I try to squeeze out as much sugar syrup as possible. So I said to hell with it. We'll have it with the sugar syrup. Say what? Oh, very nice. And on that sweet note, I'm going to end with a little bit of Misti Doi. I'm going to say thank you to both of you all. Just so happy to be here and share It's our pleasure. this wonderful day with you all. What I'm going to do after this is I'm going to head out onto the streets of Calcutta and do some Pandal hopping. A little bit of hopping. Huh? I can't hop that much, but I'll hop. सदियों से ऐसा कहा जाता है दुर्गा पूजा एक प्राइवेट एंड पारिवारिक पूजा है पर 18th सेंचुरी में राजा नवकृष्ण देव hosted the first Durga Puja in a pandal in Kolkata for public celebration. फिर क्या साल दर साल this concept gained popularity and over the years social and cultural organizations started organizing their own public pujas in elaborately decorated pandals. The excitement of Durga Puja follows us everywhere in Kolkata. We started our Pandal hopping here at Bokul Bagan and it's very, very artistically done. The theme over here is Moksha and you can see life beginning and ending right in all these tableaus that have been quite artistically created over here. So come with me and let's have some darshan. Every time you go to the Pandal, there are lots of stalls over here. This is a tandoori stall. I'm going to check out what's on
ज़्यादा पंडाल का बंगाली फूड खाना चाहता हूँ, लेकिन सामने कबाब आकर रुक गया मैं, इसलिए मैं ये चिकन लेग गरम है खा रहा हूँ। हनी कोरियन सॉस विथ नींबू। The pandals that we are visiting today are an expression of creativity. They are modern, they are artistic, they have a theme, and they are beyond the traditional normal pandals that you see. So like this one is slightly industrial, has got a lot of deep meaning into it. There's Rabindranath Tagore behind us and everything made out of metal. So let's go and have a look at this one also. Come. ये तो पूरी रात भर चल सकता है पंडाल हॉपिंग। मेरा पंडाल हॉपिंग तो आज यही ख़त्म हो रहा है क्योंकि मैं थोड़ा थक गया हूँ, लेकिन कोलकाता में एक्साइटमेंट है, जोश है और पूरी रात ये सब चलने वाला है। सभी मेरे बंगाली भाई और बहनों को हैप्पी दुर्गा पूजा पूजो की शुभकामनाएं। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ राइट टू अस, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आते रहिए, खाते रहिए और पूछते रहिए कि खाने में क्या है। I just love Misti Doi. The best. I remember when I first came to Calcutta, I'd come to do a play years ago. This was 35 years ago. And we all came by train, Gitanjali Express. And we were staying, we were performing at Shakespeare Sarani at Kala Mandir. And we were staying in a hotel which a Parsi owned called Rat Din. I don't know if it's still there. There you go. Okay. It was very bad in those days. And we were all poor theatre people. So we finished the plays and I took 2 big handis back to Bombay on the train. But the train took some 30 hours. So that handis got over on the way train only. बहुत ही आला किस्म का फूड था। अच्छा, एक सवाल जो मेरे माइंड में आया है वो ये कि मुझे ये पूछना था कि जैसे डिफरेंट पूजाज होती हैं, ये तो दुर्गा पूजा थी और इसके अंदर जैसे खाने का जो एक मतलब मेन्यू होता है या खाने के जो इंतज़ामात होते हैं, तो सेम डिशेस हर पूजा में होती है या फिर पूजा के लिहाज से डिशेस चेंज हुआ करती हैं? ये मुझे लाजमी बताइएगा ताकि मेरी नॉलेज में इजाफा हो। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें, दुर्गा पूजा की बात करें, और इसके अंदर हमने देखा कि वेज में पूरी भी थी, जिसे हम तो पूरी बोलते हैं, पूरी या कचौरी बोल सकते हैं। अच्छा, मीठे में 3 चीज़ें थी, बटर क्रीम, रसगुल्ला और मिस्टी डोई। अच्छा, मिस्टी डोई के हवाले से जैसे हमारे साइड पे रबड़ी मिलती है कुछ उस तरीके से, मट्टी के कुलचे में, मट्टी के कुलचा बोलते हैं, मट्टी के बर्तन में मिलती है, मुझे नहीं पता उसको क्या कहते हैं, मटकी टाइप का होता है, तो उसके अंदर हमें रबड़ी मिलती है। अब मुझे नहीं पता मिस्टी डोई डिफरेंट होती है या उसी टेस्ट की होती है, लेकिन मुझे देखकर जो लुक लाइक लग रही थी वो रबड़ी टाइप की ही लग रही थी। अच्छा, रसगुल्ला के हवाले से बात करूँगी कि रसगुल्ला मेरा भी बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। और सबसे अच्छी बात ये लगती है मुझे कि रसगुल्ला खाने के बाद आपका पेट कभी भी नहीं भरता, आप जितने भी रसगुल्ला खाओ आपका दिल करता है कि आपको और रसगुल्ला मिले।
ये मेरा थॉट प्रोसेस है, ये मेरा कॉन्सेप्ट है, मुझे ऐसा लगता है, मे भी लोगों को नहीं लगता हो। अच्छा, सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है इनके व्लॉग की, ये लगी, मैंने वैसे फर्स्ट टाइम इनका व्लॉग देखा, मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि यार हर चीज़ को बहुत अच्छे से ब्रीफ किया, बहुत अच्छे से दिखाया, जितना वो कवर कर सकते थे उतना उन्होंने कवर किया। और पंडाल के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें दिखाई, बहुत सारी। अच्छा, नॉन वेज भी था और नॉन वेज बला का था, मतलब इनकी राल टपकने लगी। इन्होंने बोला कि मैं और भी चीज़ें खाना चाहता था लेकिन मुझे नॉनवेज देखकर मैं रोक नहीं पाया ख़ुद को, नॉनवेज भी था। मैं एक चीज़ और भी सोच रही थी ड्यूरिंग द वीडियो कि यार कितना, मतलब आप लोगों के यहाँ इतने फेस्टिवल्स होते हैं, इतने इवेंट्स होते हैं कि अगर बंदा अपने रोज़गार के बारे में सोचे तो उसे कोई टेंशन नहीं है, यानी कि कितना रोज़गार होता होगा लोगों का, कितना फ़ायदा होता होगा, कितना नफ़ा होता होगा। इस तरीके के इवेंट्स या इस तरीके की पूजा या इस तरीके के फेस्टिवल्स होते होंगे जिसमें सबका फ़ायदा होता होगा, जिससे सब फ़ायदा उठाते होंगे और खुश होते होंगे। तो ऐसे फेस्टिवल्स होने चाहिए, ऐसे फेस्टिवल्स होने की वजह से बहुत सारे लोगों को मैं कहूँगी भला भी होता है। और दूसरी बात ये कि आप अपने रब से या आप ऊपर वाले से जुड़ते हो, उसके करीब होते हो। अच्छा, वो जो मैम थी इस व्लॉग के अंदर, उन्होंने काफ़ी अच्छे से सब समझाया, काफ़ी अच्छे से बताया और ये भी बताया कि पूजा किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ की जाती है, क्या होता है, क्या इंतज़ामात होते हैं। अच्छा, ये जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ कि ये घर था, घर के अंदर ही बहुत सारे इंतज़ामात वगैरह हुए थे और पूजा की पूरी तैयारी थी और वो बता रही थी कि कैसे प्रेपरेशंस हुई हैं, क्या है, लोगों के लिए क्या क्या किया जाता है और चीज़ों में क्या क्या रखा जाता है, सारी चीज़ें उन्होंने डिटेल में बताई और समझाएं। और ये काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे, स्पेशली खाना जो था या जो प्रसाद था, कह सकते हैं वो जो था, इनके बड़े मतलब इनको बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया, बार बार बहुत तारीफ़ें भी कर रहे थे। और अच्छा, दाल राइस जो था वो देखकर और उसके ऊपर वो आलू भाजी देखकर तो मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं भी शुरू हो जाऊँ, क्योंकि दाल राइस मेरे फेवरेट है। और उसके साथ आलू की हम भी अक्सर ऐसा होता है कि इस तरीके से आलू को फ्राई करके और दाल राइस के साथ खा रहे होते तो एक अलग ही मज़ा होता है। वो चीज़ तो बहुत ही हटके लग रही थी, वो जो फिलिंग के साथ स्टफ़ के साथ थी, वो तो बाकायदा उन्होंने मतलब उठा के बाइट लेना शुरू कर दिया कि मैं नहीं छोड़ सकता इसे। तो बहुत अपने आप में एक, मैं ये कहूँगी, यूनिक भी था, अपने आप में बहुत स्पेशल, और बेशक स्पेशल तो है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ऐसे उत्सव पे बनाया गया है, ऐसे इतने दिल, इमोशंस और फीलिंग्स के साथ जैसे कि उन्होंने कहा बनाया गया है, तो उसका टेस्ट तो लाजवाब होना ही था। और दुर्गा पूजा के हवाले से मुझे बहुत सारी टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिल रही है। पहले बस ये सुना था कि ये एक पूजा बहुत बड़े पैमाने पे की जाती है जिसे दुर्गा पूजा कहते हैं, लेकिन अब पता चला कि जैसे कि मैंने थोड़े पिछले दिनों नवरात्रि की वीडियो देखी, उसके अंदर मुझे 9 डेज़ के बारे में पता चला, दशहरा के बारे में पता चला और दुर्गा पूजा के बारे में पता चला। तो ये चीज़ें मुझे डे बाई डे मुझे ऐसा लगता है कि नॉलेज दे रही हैं, डे बाई डे मुझे काफ़ी एजुकेट कर रही हैं इन मामलात में कि अगर मुझे कभी किसी से बात करनी हो तो मैं कर सकती हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है इस तरीके की वीडियोस आप लोग मुझे सजेस्ट करते हैं, थैंक यू सो मच। हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मुझे ये वाली वीडियो सजेस्ट की। अच्छा, ये खाने में क्या है, ऐसा लग रहा है काफ़ी वायरल सा है, मैंने पहले कभी सुना सा लग रहा है कि खाने में क्या है, शायद मैंने उनके व्लॉग्स देखे हैं या ये चीज़ सुनी है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने पहले भी देखा होगा लेकिन याद नहीं आ रहा। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि ये कैसे मैंने सुना होगा, क्या वजह होगी, क्या रीज़न होगा। अच्छा, एक चीज़ और भी मेंशन करना चाहूँगी कि इतना बड़े पैमाने पे इतना बड़ा पंडाल, यानी कि उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी और कई दिनों की काफ़ी वक्त लगाए, काफ़ी दिनों की अनथक मेहनत दिखाई दे रही थी कि लोगों ने कितने इमोशंस के साथ, कितने एहसासात और जज्बात के साथ इसको बनाया है, तैयार किया है और कितने मतलब जुड़े हुए हैं लोग इन चीज़ों से, इससे। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था देखकर, बेशुमार चीज़ें थी जहाँ तक नज़र जा रही थी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत कुछ दिखाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा इन्होंने कहा कि मैं थोड़ी सी टायर्डनेस फील कर रहा हूँ, तो बस यहीं पे मेरा व्लॉग ख़त्म हुआ। लेकिन देखने वाले के लिए बहुत सारी चीज़ें, तो और सबसे बड़ी बात, पूरी रात ये मेला, ये गहमा गहमी चकाचौंध पूरी रात लगी रहेगी और कितना मज़ा आता, काश मैं भी वहाँ होती। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल, और आप हमारे चैनल वाव फैक्ट 2.0 को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दूसरों के साथ शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और ऐसे फेस्टिवल्स बनाते रहें ताकि हमें भी नॉलेज मिलती रहे, हमें भी खुशी होती रहे। आप लोगों को देख कर ही हमें बहुत खुशी होती है कि इस तरीके से मेल मिलाप देखने को मिलता है। फेस्टिवल का मकसद और इस तरीके के इवेंट्स का मकसद बहुत सारे मकासद होते हैं, लेकिन 2-4 अगर मैं बताऊं आपको तो यकजहती का एक बड़ा रीज़न बनता है ये, और इसके अलावा मुझे लगता है रोज़गार का एक बड़ा रीज़न बनता है ये, अपने रब से जुड़ने का एक बड़ा रीज़न बनता है ये।
तो ये तो मेन रीज़न्स हैं, और भी बहुत सारे रीज़न्स, बहुत सारी वजूहात हैं। तो बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को देखकर, ये मेल मिलाप देखकर, इस तरीके के फेस्टिवल्स देखकर। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।